Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today we will learn MDCAT Essential Word List from 31 to 45. Our first word is confirm. Confirm का मतलब होता है तस्दीक करना. Meanings are to establish the truth, accuracy, validity or genuineness of, corroborate, verify. Sentences: Their sport confirmed my determination to run for mayor. Synonyms are affirm, corroborate, reassert, substantiate, support, sustain. And antonyms are confuse, contradict, deny, disallow, disapprove, discredit, disprove, invalidate, refuse, reject, disagree. Next word is caution. Caution का मतलब होता है खबरदार करना, रोक देना. Meanings are to give warning to, advise or urge to take heed. The newspapers caution against over-optimism. Synonyms are advise, warn, recommend, counsel, urge, admonish, exhort. Antonyms are abruptness, hastiness, impetuousness, precipitousness, rashness, sadness, inconsiderateness, inconsideration and thoughtlessness. Next word is captivated. आप इस इमेज को भी देखते हैं, एक नेचुरल सीन है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, आप मशहूर हो जाते हैं, आप उसके जादू में जकड़े जाते हैं, तो ये कैप्टिवेटेड होता है, एनचांटेड और कैप्टिवेटेड. मीनिंग्स हैं टू अट्रैक्ट एंड होल्ड द अटेंशन और इंटरेस्ट ऑफ एज बाय ब्यूटी और एक्सीलेंस, एनचांट. सेंटेंसेस: हर ब्लू आईज एंड रेड हेयर कैप्टिवेटेड हिम. Synonyms are enthrall, charm, enchant, bewitch, fascinate, beguile, entrance, enrapture, delight, attract, allure, lure. Antonyms are annoy, bore, depress, disappoint, disenchant, disgust, displease, disturb, forget, offend, pain, refuse. अब इस इमेज को देखें, इसमें लेडी इज टॉकिंग और वो बंदा शायद उसकी बातों से फेड अप हो गया. तो इस इमेज से भी कुछ हम गेस ले सकते हैं वर्ड को अंडरस्टैंड करने में. कंडिसेंडेड, खुद नुमाई, अपनी अहमियत उजागर करना. तो जब हम दूसरों के सामने अपनी तारीफें करते हैं तो दूसरे उसका जो रिएक्शन देते हैं वो इस तस्वीर से मिलता जुलता ही है. द पर्सन इज अपसेट ऑफ व्हाट शी इज सेइंग. तो इस तरह की खुद नुमाई को कंडिसेंडेड कहते हैं. कंडिसेंड और उसकी नेक्स्ट फॉर्म्स है कंडिसेंडेड. Meanings are to behave as if one is conscious of descending from a superior position, rank or dignity. He would not condescend to misrepresent the fact. Synonyms are patronize, treat condescendingly, speak condescendingly to, speak haughtily to, talk down to, look down one's nose at, look down on, put down, be snobbish to. To make oneself superior, ये इसमें सेंस होती है अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करना. Antonyms are contradict, decline, deny, disagree, disallow, disapprove, disobey, dispute. नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि राइटर्स के हाथ बंधे हुए हैं. तो मजबूर करना, compelled, तो ये एडजेक्टिव है. compelled, मजबूर करना, बंधा हुआ होना, confine होना. Meanings are to force or drive, especially to a course of action. Sentence is his disregard of the rules compels us to dismiss him. Synonyms are pressure or pressurize, impel, drive, press, push, urge. And antonyms are dissuade, discourage, halt, leave, alone, stop, block, check, delay, deter. Next image is इवेल्युएशन. क्राइटेरिया मेयार को कहते हैं. तो इसमें जैसे ये इवेल्युएशन है तो हम चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर बंदे में ये एबिलिटीज हैं तो वो इस काम के लिए, इस जॉब के लिए फिट है. अगर नहीं है तो वो अनफिट है. तो एक हमने स्टैंडर्ड या क्राइटेरिया या मेरिट रखा होता है.
तो इसका मीनिंग हम यूं ही समझ लें, क्राइटेरिया इज मेरिट. Meanings are a standard of judgment or criticism, a rule or principle for evaluating or testing something or somebody. Sentence is she got job because she fulfilled the required criteria. Synonyms are standard, norm, yardstick, benchmark, touchstone, test, formula, measure, gauge, scale, barometer, indicator, litmus test. And antonyms are change, conjecture, fancy, guess, possibility, probability. Next word is daintily. ये एडवर्ब है, नज़ाकत से, हसास होना, किसी चीज को बहुत ही अंदाज से डील करना. daintily. Meanings are pleasing to the taste and often temptingly served or delicate or delicious. Sentence is she made a lace handkerchief daintily. Synonyms are exquisitely, deftly, neatly, and antonyms are difficultly, roughly, uncarefully, heavily. Next word is dispensing. देना, अता करना. ये भी एक इसका मीनिंग होता है. डिस्पेंसरी इससे लफ्ज निकला है, डिस्पेंसर निकला है. तो गिवर ऑफ द ग्रेस, गॉड के लिए ये एट्रीब्यूटिव नेम है. मीनिंग्स आर टू डील आउट, डिस्ट्रीब्यूट, मेक अप एंड डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन, especially on prescription. Sentences only wise people dispense knowledge and wisdom. Synonyms are waive, omit, drop, leave out, forego, give up, relinquish. Antonyms are conceal, hide, hoard, hold, keep, retain, secret, attack. नेक्स्ट वर्ड इज, जैसे आप देख सकते हैं वो रोप को खींच रहे हैं दोनों तरफ से, तो ये तनाजा या झगड़ा होता है, डिस्प्यूट कहते हैं इसको. मीनिंग्स आर टू एंगेज इन आर्ग्यूमेंट और डिबेट, टू आर्ग्यू वेहेमेंटली, wrangle or quarrel. Sentence is the commander decided to dispute an advance of troops. Synonyms are debate, discussion, discourse, disputation, argument, controversy, contention, disagreement, altercation, falling out. And antonyms are accord, agreement, calm, concord, co-occurrence, harmony, peace, quiet. Next word is distract, munharif hona. You don't know what to say, what not to say. There are so many things to do. आप उसमें distract हो जाए, भटक जाएं, रास्ते से अलग हो जाएं. Meanings are to draw away or divert as the mind or attention, to disturb or trouble greatly in mind, beset. Sentences I am bored with bridge, but golf still distracts me. Synonyms are disturbing, unsettling, intrusive, disconcerting, bothersome, confusing. Antonyms are anger, bore, calm, clarify, clear up, comfort, explain, tire, upset, help, make happy, soothe. Next image is drummed. जैसे ड्रम बजाया जा रहा है, ड्रम का मतलब आवाज पैदा करना, मनादी करना, हिट, जर्ब लगाना भी होता है इसका मतलब. Meanings are to beat on anything rhythmically, especially to tap one's fingers rhythmically on a hard surface. Sentences in an emergency situation, all the levers were drummed. Called मतलब इसका होगा. Synonyms tap, beat, rap, knock, strike, thud, thump. Antonyms are silence, mute, and serene. Next image, you can see a building. इसमें कोई भी नहीं है, खाली है, बेकार है. तो dilapidated, खस्ता हाल, जिसको में रहा ना जा सके. Reduced to or fallen into partial ruin or decay as from age, wear or neglect. किसी चीज का अपनी मुद्दत का पूरा कर लेना और वो खस्ता हाल उसको कह सकते हैं आप. Sentence is last month I visited a dilapidated mansion. मैंने किसी हवेली को विजिट किया जो खस्ता हाल थी. Synonyms are tumble down, ramshackle, broken down, shabby, battered, rickety, shaky,
unsound, crumbling. Antonyms are okay, good, healthy, neat, nice, repaired, sound, stable, stable, in good repair. Disconsolately. एडवर्ब है तन्हाई से, खौफ से, without consolation or solace, hopelessly, unhappily, inconsolably. Sentences: loss of her pet dog made her disconsolate. Synonyms are desolately, gloomily, sadly. Antonyms are confidently, expectantly, hopefully. Next image is delicately. नज़ाकत से ये adverb है. Meanings are fine in texture, quality, construction, etc. Fragile, easily, damaged, frail. Sentences: she has fragile beauty. Synonyms are exquisitely, fine, finely. Antonyms are indelicately, strongly, uncarefully. And last for today is dank. नमदा जिसपे पानी जमा हुआ हो, पानी हो, नमी हो, जैसे दीवारों पे अक्सर होता है या ये शीशे पे जो नजर आ रहा है आपको, तो डैंक कहते हैं इसको. Meanings are unpleasantly moist or humid, damp and often chilly, excellent, high quality. Sentence is there was plenty of booze and dank weed at the party. Synonyms are damp, musty, chilly, clammy, wet, moist. And antonyms are dry, parched. At the end of the lecture, I hope you have understood all the vocabulary words very well. Best of luck.